Assalamu alaikum students. Today we are starting 970912 October November 2020. Now the starting time is 11:02. Let's say when we will finish this paper. Now start करते हैं जनाब. In question number 1, what we have in question number 1? Question number 1 is a question of binomial. The coefficient of x cube in the expansion of combined expansion is 20. Find the value of k. So now, in this, the first bracket is expanded as the power of the first bracket is 1. But we have to expand the second bracket by using binomial formula. So it will be 1 plus nc1 b1 plus nc2, where n is 5, nc2 b2 plus nc3 b3 and so on. We just need up to x cube. We just need up to x cube. So it will be 1 plus kx. By using our calculator, 1 plus 1 minus 10x plus 40x squared minus 80x cube is the expansion of the second bracket up to x cube. As the coefficient of x cube is 20, so first find where we'll get the x cube value. So if 1 multiply with minus 80x cube, we'll get minus 80x cube. So I'm writing here minus 80x cube. And if kx multiply with x squared, then we'll get plus 40kx cube, because x into x squared is x cube. Now, as we know that the coefficient of x cube minus 80 plus 40k is equals to 20. So 40k is equals to 100. And what is the value of k? The value of k is 5/2. This is the value of k. Hopefully, the first question of 4 marks is clear, not a difficult question. Now, we are moving further. Question number 2. The first, second, and third term of geometric progression are given. Find the sum to infinity of the progression. Find the sum to infinity of the progression. But here we don't have the value of p. So first we have to calculate the value of p. This is t1. This is t2. This is t3. In geometric progression, as we know that t2 divided by t1 is equals to t3 divided by t2. The common ratio is same. So what is t2? T2 is minus 2p divided by t1 is 2p plus 6 equals to what is t3? T3 is p plus 2 divided by t2 is minus 2p. Now, cross multiplication, minus 2p multiplied by minus 2p will give us 4p squared, and 2p plus 6 multiplied with p plus 2 will give us 2p multiplied by p is 2p squared, 2p multiplied by 2 is 4p, 6 multiplied by p is 6p, and 6 multiplied by 2 is 12. So it will be 2p squared minus 10p minus 12 equals to 0. By using our calculator, what is the value of p? The value of p will be 6. And negative value, we have to reject the negative value as it is written over here that p is positive. P positive hai. So now the geometric progression will be, first term में अगर p की जगह पर 6 रखा जाए तो it will be 6 2 are 12, 12 plus 6 is 18. Second term में p की जगह पर अगर 6 रखा जाए तो it will be minus 12. Third term में p की जगह अगर
6 रखा जाए तो it will be 8. This is the geometric progression where A is 18 and common ratio is second term divided by first term. So it will be 6 2s are 12 and 6 3s are 18. The common ratio is 2/3. Sum up to infinity अगर हमें calculate करना है तो we have a formula 1 over a over 1 minus r. So a is 18 divided by 1 minus r. R is minus 2/3, so it will be plus 2/3. So the final answer will be 10.8 by using our calculators. Hopefully this question of 5 marks is also clear. Now, after that, what we have in question number 3? इस क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहे हैं. देखते हैं क्या है what we have in this question number 3. What we have in this question number 3. Now, the equation of the curve is given where m is a constant and the equation of a line is given. Show that for all values of m, the line intersect the curve at 2 distinct points. जब यहां पर ये आ गया at 2 distinct points, it means we have to use discriminant which is greater than 0 because of the 2 distinct point. And जब भी हम discriminant यूज करते हैं, इक्वेशन होनी चाहिए x की फॉर्मेट में, y नहीं होना चाहिए. तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं हम जरा. 2x स्क्वायर plus 2xm plus m equals to 6x plus 4. Now 2x squared plus 2xm minus 6x plus m minus 4 equals to 0. Now use discriminant which is greater than 0. So b square minus 4ac is greater than 0. What is b? B is 2m minus 6 whole square minus 4. What is a? A is 2. And what is c? C is m minus 4 is greater than 0. Now expand the bracket. A square minus 2ab plus b square minus 4 to the 8m plus 4 to the 8 and 4 8 are 32 greater than 0. Now 4m square 4m square and 24 and 8 will be minus 32m. 36 and 32 will be plus 64 is greater than 0. अब एक काम करते हैं, होल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं जरा 4 से. तो इट विल बी m स्क्वायर माइनस 32 divided by 4 will give us 8 and 64 divided by 4 will give us 16. So here it is 8m plus 16 is greater than 0. Now we have to prove that at any value of m, the left hand side is greater than 0. The left hand side is greater than 0 because we have to prove that. Show that for all values of m, the line intersect the curve at 2 distinct points. हमें वर्किंग ऐसे करनी है कि हमें ऐसे प्रूफ करना है कि m की कोई भी वैल्यू हो, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी, कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी. इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड यूज करते हैं. मींस m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16, इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं अपने a x माइनस h मतलब m माइनस h होल स्क्वायर a x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k, ये हम क्वाड्रेटिक्स में करते हुए आए हैं. सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab plus b squared. I'm just completing the whole square thing. So don't confuse by m. It is basically x 2amh plus h squared
plus k. AH square plus k. Now, coefficient comparison. M square with A, left hand side M square with 1. So A is M. A is 1, sorry. The coefficient of M is right hand side minus 2A M, sorry, minus 2AH. The coefficient of M towards right is minus 2AH and towards left is minus 8. So what is the value of H? The value of H is 4. And the constant AH square plus K is equal to the constant 16. So the value of K is 16 minus AH square. So it will be A is 1, H square 4 square is 16. So K is 0. Therefore, we can say that the completing the whole square form of M square minus 8M plus 16 will be M square minus 8M plus 16 will be, हम लिख सकते हैं इसको by using our this A की जगह पर 1 आया. M कितना है हमारे पास? M is M. H कितना है हमारे पास? 4 whole square. Now, let me check that whether K is 0 or not. 16 minus AH square. Where? इसको जरा मैं फिर से एक बार कैलकुलेट कर लूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. There's a problem before that. And what is the problem? Problem is 36 plus 32. 36 plus 32 will be 68, not 64. So if it is 68, then it will be 17. It will be 17. And here, this is 17. And here, it is also 17. And by this, 17 minus AH square. 17 minus 16, the result of K is 1. Here, the result of K is 1. The result of K is not 0. The result of K is 1. Therefore, it will be M minus 4 whole square plus 1. So, we can say that M square minus 8M plus 17, हम इसको लिख सकते हैं M minus 4 whole square plus 1 is greater than 0. अब आप देखिए लेफ्ट साइड पर M की अगर कोई भी वैल्यू रख दी जाए -100 plus 100 minus 1000 plus 1000 एनी वैल्यू ऑफ M, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है होल स्क्वायर, इस वजह से कोई भी वैल्यू M की आ जाए तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगी. तो हमें यही प्रूव करना था कि एट एनी वैल्यू ऑफ M show that for all values of M the line intersect the curve at two distinct points. It means we have to prove that at any value of M the left hand side is greater than 0. तो यहां पर हमने completing the whole square method यूज करते हुए प्रूव कर दिया, completing the whole square method यूज करते हुए प्रूव कर दिया कि left hand side is always greater than 0. तो इस पार्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहे थे, काफी मार्क्स डिडक्शन हुई है फॉर दिस पार्ट. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, अगेन द क्वेश्चन ऑफ सीरीज. एंड व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, सम की आपको एक इक्वेशन दे दी गई, सम की आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और आपसे कहा गया find the kth term in the progression is greater than 200. The kth term of the progression is greater than 200. Find the smallest possible value of k. We need to calculate the smallest possible value of k. जरा चेक करते हैं कैसे आएगी. अगर हमें सम की इक्वेशन में s1 n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास. So it will be 1 plus 4 5. अगर S2 हम कैलकुलेट करते हैं, it means it is the sum of first and the second term. So this one will be 12.
So what is the first term? T1 is 5. T1 is 5. And what is T2? What is T2? Sum of T1 and T2. आपको कितना दिया गया है? 12. If T1 is 5, then what is the value of T2? 12 minus 5, which is 7. So therefore, the second term of arithmetic progression is 7, and so on. Now, the kth term in the progression is greater than 200. It means Tn, कोई सी भी term है, we don't know, but it is greater than 200. Formula a plus n minus 1 into d greater than 200. What is a? A is 5. What is n? N is k. Common difference is 7 minus 5. It is 2 equals to 200. According to this, the value of k is 98.5. What is the smallest value of k? Therefore, the smallest value of k is 99. 99th term होगी कि जिस पर the kth term in the progression is greater than 200. 98.5 पर exactly 200 आ रहा है, तो 99th term क्या हो जाएगी? Greater than 200 हो जाएगी. This we have to prove in, this we have to find in question number 4. Now, after that, question number 5, the question of function. Question of function में भी students थोड़ा सा परेशान रहते हैं. देखते हैं जनाब what we have in this exam, in this paper. Find the value of fg7. So first calculate g7. Function g में 7 रख दीजिए. So 4 upon 7 plus 1. So the answer is 4 upon 8, 1 upon 2. Now function f में g7 रख दीजिए. g7 की वैल्यू रख दीजिए जहां x है. So it will be 4. x की जगह पर आपने 1 upon 2 रखा. Minus 2. So the answer will be 0. This is fg7. This is fg7. This is fg7. Now, let's move further. In the B part, we have to calculate f inverse and g inverse. For f inverse, compare the function f with y. Y equals to 4x minus 2. For g inverse, compare the function g with y. So y equals to 4 upon x plus 1. Now, we have to calculate the inverse for both of the functions. Make x be the subject of the first function. So 4x equals to y plus 2 and x equals to y plus 2 divided by 4. जैसे ही x सब्जेक्ट बना हम इसको कहेंगे ये इनवर्स फंक्शन है, f इनवर्स ऑफ x. It will be x plus 2 divided by 4. जहां y है वहां पर x रख दिया जाएगा. And same for this cross multiplication. X plus 1 equals to 4 upon y. So what is the value of x? The value of x is 4 upon y minus 1. Therefore, the g inverse will be 4 upon x. 4 upon x minus 1. G inverse will be 4 upon x minus 1. Now we have to compare both the inverse functions. So x plus 2 equals to 4 over x minus 1. Now we have to calculate the values of y. How can we calculate the values of y? X plus 2 divided by 4 equals to, by taking LCM of x, 4 minus x. Cross multiplication, x squared plus 2x equals to 4 4 is 16 minus 4x. So x squared plus 6x minus 16 equals to 0. By this, the values of x are, by using your calculator, 2 and minus 8. These are the values of x if the both inverse are equal. Now after that, what is next? Next is question number 6 about trigonometry. Identity proof करनी है हमें जनाब in the first part. Left hand side pick करते हैं. The left hand side is 1 over cos x, and I'm writing tan as sin x over cos x.
And here I'm taking LCM with sin x. So it will be 1 plus sin x. Left hand side पर अगर LCM लिया जाए तो it will be cos x in LCM. 1 minus sin x is remaining. Here it is 1 plus sin x divided by sin x. Now, a minus b into a plus b in numerator. So it will be a square minus b square divided by sin x cos x. ऊपर 1 minus sin square x को लिख सकते हैं हम cos square x according to the trigonometric identity divided by sin x cos x. Cos and cos cancel out. tan किसके इक्वल होता है sin over cos और यहां पर cos over sin है तो inverse of tan हो गया 1 upon tan x which we have to prove. Now after this hence solve the equation. Now for solving the equation the left hand side's value is 1 over tan x according to the first part equals to 2 tan square x. Now we have to solve the equation and we have to find all the angles between 0 to 180 degrees. Cross multiply tan. So it will be tan cube x equals to 1 upon 2. Tan cube x equals to 1 upon 2. So tan x equals to 1 upon 2 cube root means power 1 upon 3. Now tan is positive. कहां पर होगा tan positive? Tan positive is in the first quadrant and in the last quadrant. According to this, the basic angle is first quadrant and in the third quadrant. The basic angle is tan inverse of 1 upon 2 cube root. So the basic angle is 38.4. Here is 38.4, here is 38.4. So therefore, the final answer is x is only 38.4 as we are unable to go here. We have to go only up to 180 degrees. इससे आगे हम जा नहीं सकते. तो इस वजह से ये वाला एंगल हम काउंट नहीं करेंगे. Just the result is 38.4 जो फर्स्ट एंगल आया था हमारे पास. This is part B. Now next question is a question of differentiation, I think, or the question here is the point 47 lies on the curve and it is given that f dash of x, gradient of the curve dy over dx आपको दिया हुआ है. A point moves along the curve in such a way that the x coordinate is increasing at a constant rate. Rate of x coordinate हम कैसे लिख सकते हैं इसको dx over dt. Rate of x है तो x को डिवाइड कर दिया t से. कितना दिया हुआ है 0.12. अगर इंक्रीजिंग रेट है तो पॉजिटिव लिखा, अगर डिक्रीजिंग रेट होता तो नेगेटिव लिखा जाता. Find the rate of increase of y. We have to calculate dy over dt. चेन रूल अप्लाई करते हैं. हम लिख सकते हैं इसको dy over and here it is dt. क्रॉस में तीसरा एलिमेंट क्या आएगा dx का आ जाएगा. So now we need the value of dy over dx and the value of dx over dt which is given in the question, and the dy over dx is also given in the question which is 6 over under root x minus 4 over x power 3 upon 2 where x is when x is 4. So the value of dy over dx will be 5 upon 2 by taking LCM and all the things. So just replace dy over dx by 5 upon 2 and so that the final result will be 0.3. So this is the question of rate that we have to calculate a rate of y in this question. Now 7 part B, find the equation of the curve. For equation of the curve, we have to integrate the curve. And what is the equation of curve? First, I'm writing the dy over dx is given, which is 6x minus half minus 4x minus 3 upon 2. इसको differentiated equation दी गई है कर्व की, इसको इंटीग्रेट करते हैं जरा. So
This will give us fx. 6 ऐसे ही रहेगा. X power minus half plus 1 is half divided by half. Minus 4 ऐसे ही रहा. X power minus 3 over 2 plus 1 is minus 1 over 2 divided by minus 1 over 2. So it will be 6 2s are 12. X power half minus minus plus 8 upon x power half plus c. c साथ में लगेगा. Here it is y. कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन थे 4 7 से कर्व पास कर रहा है. So when y is 7 and x is 4, so it will be under root of 4 is 2 plus 8 over under root of 4 is 2 again plus c. So according to this, the value of c, according to this, the value of c will be 7 minus 24 minus 4. So c is equals to minus 21. Therefore, the equation of the curve will be y equals to 12 under root x. I'm just replacing the value of c. 12 under root x plus 8 over under root x minus 21 is the equation of curve. Hopefully, the question of integration is also clear. Now, next one is the question of circular measures. Question number 8. In this, the diagram is given. The diagram ABC is an isosceles triangle. The point D lies on AC and ABD is a sector. Okay, express the area of the shaded region in terms of R and theta. In terms of R and theta, the area of shaded region. How to calculate the area of shaded region? In this, the rule will be first calculate A1, the area of complete shape. It is a triangle. It is a triangle. And it is an isosceles triangle. So if it is the angle A is theta, then angle C is also theta. And therefore, this angle will be 180 minus 2 theta. And 180 is called pi minus 2 theta. Now, we have to calculate the area of triangle. Area of triangle, I'm writing here, area of triangle is half the two sides, AB into BC, sine of the included angle. And what is the angle? Angle is pi minus 2 theta. So therefore, area of triangle is half r squared sine pi minus 2 theta. This is the area of triangle. After that, I'm calculating the area of sector. Area of this sector. How to calculate the area of sector? We have a formula. The formula is half. The formula is half r squared theta. And r squared is, radius is r, and theta is theta. So this is the area of sector. Therefore, the final result will be, area of shaded portion will be area of triangle half r squared sine pi minus 2 theta minus half r squared theta. एरिया ऑफ सेक्टर को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगर कॉमन लेते हैं हाफ आर स्क्वायर तो क्या बचेगा इन द ब्रैकेट? साइन पाई माइनस 2 थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा माइनस theta. This is the area of shaded region in terms of r and theta. In terms of r and theta. Hopefully, it is clear. Area of triangle minus area of sector. Area of triangle minus area of sector. And after that, what is next? In case where r is 10 and theta is 0.6, find the perimeter of the shaded region. r10, theta 0.6. r10, theta 0.6. So I'm doing part B here. R is 10 and theta is 0.6. We need to calculate the area of shaded region. Perimeter of the shaded region. So the perimeter first, right? What is this perimeter? BD, a curve, plus CD, straight line, plus BC, straight line. Now, these
values we have to calculate. These values we have to calculate. Now, how can we calculate the length BD? BD is arc length. So we can say that S equals to R theta. R is R and theta is theta. Plus CD. What is CD? CD, we can say that CD is equals to AD is R. CD is equals to AC minus R. CD is equals to AC minus R. And what is BC? The BC length is given R. R and R cancel out. So it is equals to R theta plus AC. Now, how can we calculate the length AC? How can we calculate the length AC? Length AC किस तरीके से calculate की जाएगी जरा देखिएगा. If here is a triangle, if here is a triangle and we have, here is a triangle and we have two sides, side AB and side BC with the included angle pi minus 2 theta, then how can we calculate easily side AC? एक rule तो ये है कि हम इसको दो triangles में break कर दें, लेकिन मैं उससे नहीं कर रहा हूं. I am doing it by using cos rule. And if we need cos rule, so it means AC square equals to R square plus R square minus 2 R cos theta. And theta is pi minus 2 theta. Now, क्या किया हमने? कॉस रूल अप्लाई कर दिया. कॉस रूल क्या है? अगर कोई भी साइड हमें कैलकुलेट करना हो तो उसके अलावा जो साइड्स होती हैं, सम ऑफ दीज साइड्स विद स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ दीज साइड्स देन कॉस ऑफ इंक्लूडेड एंगल. ये आपने ओ लेवल में कंप्लीटली पढ़ा हुआ है. हियर इट इज 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस पाई माइनस 2 थीटा. अब हम वैल्यूज रखेंगे आर की और थीटा की. अब हम वैल्यूज रखेंगे, एक ही बार आप कैलकुलेटर में वैल्यूज रख दें आर की और थीटा की और AC कैलकुलेट कर लीजिए अंडर रूट लेने के बाद. दैट विल बी, AC कैलकुलेट कर लीजिए अंडर रूट लेने के बाद. दैट विल बी व्हेन R is 10 and theta is 0.6. कैलकुलेटर मस्ट बी इन रेडियंस. कैलकुलेटर मस्ट बी इन रेडियंस. एज जब भी हम लोग सर्कुलर मेजर सॉल्व करते हैं या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर को रेडियंस में रखना होगा. So AC की वैल्यू जो आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम द कैलकुलेटर, इट इज 16.5. So here R is 10, theta is 0.6 plus 16.5. So the final answer will be 10 multiplied by 0.6 is 6 plus 16.5. The result will be 22.5. This is the perimeter of the shaded region. This is the perimeter of the shaded region. Hopefully it is clear. Now, इस पार्ट बी को जरा हम पार्ट बी के साथ अटैच कर दें. Here we have to attach here this one plus the calculation of AC, plus the calculation of AC, and the calculation of AC are here. AC calculate किया हमने by using cos rule. Now, after this, here is AC. Now, after this, what is next question? The next question is question of circle, question number 9. A circle has center at the point 5, 1. एक circle है. The circle has center at point 5, 1. The point A lies on the circle, anywhere on the circle. I'm marking it here. A is -1, -2. I'm marking it here. This is the center of the circle. Find the equation of the circle. For equation of the circle, we have a rule, which is x minus a whole square, y minus b whole square equals to r square.
इन विच ए एंड बी क्या है, वो तो सेंटर है, तो हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं x माइनस ए इज 5, y minus b is 1 equals to, but we don't have r. So what is r? R is basically the length AB. If we calculate the length AB by using distance formula, y2 minus y1, so it will be 1 plus 2 whole square plus 5 plus 1 whole square. So by this, what is the radius? The radius of the circle is under root 45. Now, अगर यहाँ आर स्क्वायर की जगह रखते हैं अंडर रूट 45 को, तो ये क्या बन जाएगा 45. सो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. This is the equation of the circle in the form of x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, लेकिन नॉट नेसेसरी, बस इतना लिख दें काफी. मजीद पार्ट बी, द पॉइंट सी इज सच दैट, मैं डायग्राम को सामने रख रहा हूं, द पॉइंट बी इज सच दैट, sorry, point C is such that AC is the diameter. Okay, AC is the diameter. मैं इस सर्किल की जो डायग्राम है ना हमारी, इसको जरा हम कॉपी करते हैं पार्ट बी के लिए भी, ताकि डायग्रामेटिकली इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. हियर इज अ क्वेश्चन. नाउ क्या कहा गया जनाब? पॉइंट सी इज सच दैट AC इज द डायमीटर. सो C कहां पर होना चाहिए? बिल्कुल सामने A से होना चाहिए. हियर इज C. AC इज द डायमीटर. पॉइंट D हैज कोऑर्डिनेट 5, 16. कहां है नहीं मालूम. शो दैट DC इज टेंजेंट टू द सर्कल. D के साथ C अटैच है. शो दैट DC इज टेंजेंट टू द सर्कल. लेट्स से D इज हियर. D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5 and 16. अब आप देखिए, we have the coordinate of A, we have the coordinate of B, but we don't have the coordinate of C. But हम कह सकते हैं if this is the diameter, then B will be the midpoint. So according to the midpoint formula, we are able to calculate the coordinates of C. Let's say they are AB. So midpoint के accordingly, x5 equals to x1 is A, x2 is -1, x2 is -1 divided by 2. So the value of A is 5 to the 10, 10 plus 1 is 11. And midpoint का y कितना है? 1. y1 कितना है बच्चों? B. y2 कितना है? -2 over 2. So by this the value of B is 2 1s are 2 plus 2 is 4. तो C के coordinates क्या आ गया हमारे पास? 11, 4. Now calculate the gradient of AC. The gradient of AC will be y2 minus y1, 4 plus 2 over x2 minus x1, 11 plus 1, so 6 over 12. It is 1 over 2. Now calculate the gradient of CD. It will be y2 minus y1, 16 minus 4 over 5 minus 11. 16 minus 4 is 12 and 5 minus 11 is -6. So the result is -2. अब आप देखिए, as gradient of AC is negative reciprocal of gradient of CD, means they will produce -1 when we multiply both of them. 1/2 multiplied by -2 will give us -1. इससे प्रूव हो गया कि CD is the tangent to AC because tangent always makes an angle of 90 degrees with the diameter. Hopefully this part is also clear. The part B of 4 marks. Now अब एक जो पार्ट आ रहा है पार्ट सी, है तो ये 2 मार्क्स का, लेकिन इसने स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज किया था. और क्या है जनाब, इस पार्ट सी में कहा गया द अदर टेंजेंट फ्रॉम डी. अब हम जरा कॉपी कर लें इस डायग्राम को कॉपी कर लें फॉर पार्ट सी. पार्ट सी में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, स्टूडेंट्स को नहीं कर पाए थे. जरा चेक करते हैं पार्ट सी में पूछा क्या गया है. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. कहा गया द अदर टेंजेंट फ्रॉम डी टू द सर्कल टचेस द सर्कल एट टी. कह रहे हैं डी से एक और टेंजेंट भी आ रहा है जो कि सर्कल को टच कर रहा है.
कहां पर? ई पर. Find the coordinates of E. Find the coordinates of E. I'm just writing the coordinates of C properly. 11, 4, 11, 4, and the coordinates of B 5, 1, and the coordinates of A के जो आपके पास coordinates आए हैं जो गिवन थे वो -1, -2. अब आप देखिए किस तरीके से वर्किंग होगी. इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं डिफरेंटली बना रहा हूं. थोड़ा सा मैं डिफरेंटली बना रहा हूं. Let's say the circle is here. Let's say the circle is here. 5 and 16 से 5 and 16 से let's say 5 and 16, these are the coordinates of D. 5 and 16 are the coordinates of D. यहां से टेंजेंट्स बन रहे हैं सर्किल पर. एक टेंजेंट बना, एक टेंजेंट बना टुवर्ड्स राइट, एक टेंजेंट बना टुवर्ड्स राइट, और एक टेंजेंट बना टुवर्ड्स लेफ्ट. ये जनाब टेंजेंट्स बनकर आए. अब देखिएगा, एक बार ये टकराया सी से और एक बार ये टकराएगा कहां से? ई से. And we need to find the coordinates of E. Here is the circle's center, which is B 5, 1, which is B 5, 1. C के coordinates हमारे पास मौजूद हैं. C के coordinates हैं 11, 4. हमें coordinates चाहिए किसके? हमें E के coordinates चाहिए. अब आप देखिए how to calculate the coordinates of E. इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहे थे कि E के coordinates किस तरीके से आएंगे, कि E के coordinates किस तरीके से आएंगे. अब आप देखिए सी आपको 11, 4 दिया गया. बी के कोऑर्डिनेट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं 5, 1. बी के कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख रहे हैं 5, 1. अगर मैं सी को ई से ज्वाइन कर दूं, अब आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन है. टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सर्किल तक. तो इट मींस हमें ये तो मालूम हो गया कि ई के जो यहां पर एक और चीज देखिएगा, बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 5. और डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 5. इट मींस ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही होगी जो कि एक्स एक्सिस को कहां से टकरा रही है? जो कि एक्स एक्सिस को कहां से टकराएगी? एक्स एक्सिस को 5 से इंटरसेक्ट करेगी. ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन चल रही है, बिकॉज डी के कोऑर्डिनेट्स एक्स भी 5 है और बी के एक्स कोऑर्डिनेट भी 5 है. तो ये पता चला हमें एग्जैक्टली ये एक परपेंडिकुलर लाइन हमें नजर आई. This is the perpendicular line. मैं ये वाली डायग्राम को हटा रहा हूं अभी. Now, and what is the equation of this green line? The equation of this green line is y x equals to 5. X equals to 5. अब सुनिएगा, अगर परपेंडिकुलर मूवमेंट है तो जितना C D से ऊपर है उतना ही E भी D से ऊपर होगा. तो C कितना ऊपर है D से? 4. तो E के कोऑर्डिनेट्स भी y कोऑर्डिनेट्स 4 आ जाएंगे, बट वी डोंट हैव द x कोऑर्डिनेट ऑफ E. हमें अब E के x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है. इसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कैसे कैलकुलेट किए जाएं इसके x कोऑर्डिनेट. अब इसके x कोऑर्डिनेट के लिए तो अच्छा क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का, लेकिन है काफी लेंथी. तो x अगर 5 है, ये जो आपको b के ऊपर भी x5 है, d के ऊपर भी x5 है, c के कोऑर्डिनेट्स 11, 4. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने e के कोऑर्डिनेट्स y पर 4 रख दिए. अब सुनिएगा d पर अगर x5 है, b पर अगर x5 है, तो इस पॉइंट पर भी x कितना होगा? 5 होगा. इस पॉइंट पर भी x कितना होगा? 5 होगा. और एज the green line is the perpendicular line. The green line is the perpendicular line. अगर मैं x axis y axis बनाता हूं, let's say here is the y axis and here is the x axis. x is 5, x is 5. तो अब आप देखिए राइट साइड पर हम कितना गए कि 11 मिला हमें. हाउ मच टू ऐड टू गेट 11? c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो 5 में 6 हमें ऐड करना होगा, तो हम 11 पर पहुंच जाएंगे. और 5 में से अगर 6 हम माइनस कर देंगे तो हम E के कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाएंगे. तो 5 - 6 इज -1.
तो देयरफॉर यहां से जो ई के कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास वो कितने आए, -1, 4। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। क्वेश्चन दिया गया है 2 मार्क्स का, बट थिंकिंग प्रोसेस में काफी ज्यादा था। डायग्राम बेस्ड वर्किंग की गई तो इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आफ्टर दिस क्लास आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो, तो पार्ट सी को आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। होपफुली अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is an equation is given, equation of curve is given. Find an expression of dy over dx. We need to calculate dy over dx. dy over dx का एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। जरा कर्व की इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इक्वल्स टू 2, इसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाएं, 3 - 2x होल स्क्वायर माइनस एक्स होल पावर -2। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy over dx विल बी 2 ऐसे ही रहा। पहले पावर को डिफरेंशिएट करें, पावर -2 नीचे आई, पावर में से 1 माइनस हुआ, -2 - 1 इज -3। साथ में बेस का डेरिवेटिव, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द बेस इज -2। सो देयरफॉर द फाइनल डेरिवेटिव विल बी 2 2s are 4 and 4 2s are 8। 8 टाइम्स इसको 3 - 2x होल पावर -3 के साथ, अच्छा सॉरी साथ में -x भी तो था, -x जो था साथ में, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1। सो दिस इज the complete derivative dy over dx. Now we have to calculate d square y over dx square. सेकेंड टाइम भी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सेकेंड टाइम जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इट विल बी, सेकेंड टाइम जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो इट विल बी, अच्छा मैं इसको एक बार फिर चेक कर लूं कि डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2 3 - 2x होल पावर -2 माइनस एक्स, देन नीचे आएगी, जब -2 नीचे आया तो इट विल बी -4 एंड देन एग्जैक्टली इट्स ओके। नाउ सेकंड डेरिवेटिव विल बी, अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, 8 ऐसे ही रहेगा, पावर नीचे आएगी -3, 3 - 2x, पावर में से 1 माइनस, -3 - 1 इज -4, और -1 का डेरिवेटिव, -1 का डेरिवेटिव, -1 का डेरिवेटिव 0, तो ये रिमेनिंग रहा। सो द फाइनल आंसर विल बी 8 3 is 24 and 3 - 2x whole power -4. This is the second derivative, and after that we also have to integrate the curve. कर्व को हमें इंटीग्रेट भी करना है, तो जब कर्व को इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा जनाब, 2 ऐसे ही रहा, 3 - 2x whole power -2 + 1 is -1 divided by the added power, डेरिवेटिव ऑफ द बेस अब यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, और x minus x square by 2. So the finally it will be minus minus plus 2 over, and 2 cancel out. So it will be directly 1 over 3 - 2x, पावर -1 थी तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर आ गया, -x square over 2. This is the integration of the equation of the curve. A 6 marked question. A 6 marked question, 2 बार आपसे डिफरेंशिएट करवाया और 1 बार आपसे इंटीग्रेट करवाया। आफ्टर दैट क्या कहा गया, फाइंड बाय कैलकुलेशन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। हाउ टू कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। एम है क्या चीज, जरा हम चेक करते हैं। एम यहां पर लिखा हुआ है, एम इज द मिनिमम पॉइंट। जब भी मिनिमम पॉइंट कैलकुलेट करना होता है हम क्या करते हैं, dy over dx को इक्वेट कर देते हैं 0 से। dy over dx equals to 0. So what is dy over dx? dy over dx is 8 over 3 - 2x whole power 3 -1 equal to 0. सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 8 over 3 - 2x whole cube equals to 1. So we can say that 3 - 2x whole cube by cross multiplication equals to 8, and 3 - 2x equals to the cube root of 8 is 2. So the value of x is, 2x right side पर गया, 2 लेफ्ट साइड पर आया, तो इट विल बी 1/2. द वैल्यू ऑफ x इज 1/2. 1/2 आ गई हमारे पास x की वैल्यू,
x की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमें तो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। अगर x की वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखते हैं, y इक्वल्स टू 2/3 माइनस 2, x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1/2 होल स्क्वायर, माइनस x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 1/2। सो by this what is the value of m? By this the value of m is 0. Sorry, the coordinate of y is 0. Therefore m के जो coordinates बनकर आए वो क्या बनकर आए, और हमें नजर भी आ रहा है x एक्सिस को ये टच कर रहा है, which lies on the x axis. तो it's not necessary to do this step. हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m के कोऑर्डिनेट्स, और m के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं हमने, the coordinates of m are x में हाफ और y में 0. This is part B. And now what we have to do in part C? Part C में most probably ये एरिया कैलकुलेट करवाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक हो गया। हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, आई एम डूइंग पार्ट सी हियर। जो हमने इंटीग्रेट किया हुआ है उस पर लिमिट्स अप्लाई कर दीजिए। कहां से कहां तक, 0 से लेकर हाफ तक। 0 से लेकर हाफ तक की लिमिट अप्लाई करेंगे, किस पर, अपने कर्व पर। कर्व को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या आई है, 1/3 माइनस 2x, 1/3 माइनस 2x, और साथ में क्या है, x²/2 माइनस x²/2 माइनस x²/2। अब लिमिट से अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर हम। अपर लिमिट इज हाफ, सो इट विल बी 1/3 माइनस 2 इंटू हाफ, माइनस x की जगह पर हाफ square/2 upper limit minus lower limit, and the lower limit is 0, so 1/3 minus 0. According to this, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और देख लें इसको, एक स्टेप शो भी किया जा सकता है। आई एम नॉट शोइंग एनी स्टेप फर्दर, just I'm doing directly from the calculator, and the result will be this is 1/24. The result is 1/24. So here is the complete question number 10. Part B भी यहीं पर ही कर दिया, part C भी यहीं पर ही solve कर दिया गया है। And now question number 11 is the last question of your this paper. A curve has equation y equals to 3 cos 2x plus 2. State the greatest and the least value of y. How to calculate the greatest and the least value of y if the equation of the curve is here? तो अब आप देखिए, जो भी कांस्टेंट होता है वो आपका मेन एक्सिस होता है। सो द मेन एक्सिस हियर इज 2, और इसके बाद जो भी मल्टीपल होता है फंक्शन का उसको 2 में आप ऐड करवा दीजिए। सो 2 + 3 इज 5, 2 से सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, 2 - 3 इज -1। सो व्हाट इज द maximum value? The greatest value is 5, and the least value is -1. Just मेन एक्सिस में आपने क्या करना होता है, मेन एक्सिस को कहते हैं C और एम्पलीट्यूड को कहते हैं A। तो मैक्सिमम हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या हो जाता है, C + A, और मिनिमम कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या हो जाता है, C - A। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्केच द ग्राफ। ग्राफ को हमें स्केच करना है। अब कहां से कहां तक करना है स्केच जनाब, कर्व को हमें 0 से लेकर पाई तक, मींस 180 डिग्रीज तक कर्व को हमें स्केच करना है। हमें 180 डिग्रीज तक कर्व को स्केच करना है। सो नाउ अब आप देखिए किस तरीके से स्केच होगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, इट इज 2x। तो पहले तो हमने π/2 90, एंड आफ्टर दैट हियर इट इज पाई 180, लेकिन हर पोर्शन को दो पोर्शन में ब्रेक कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 2x। नाउ कॉस कर्व कहां से स्टार्ट करेंगे, द मेन एक्सिस हियर इज 2, द मेन एक्सिस हियर इज 2, 2 + 3 इज 5, ऊपर हमें 5 तक जाना है, नीचे हमें -1 तक आना है। कर्व स्केच करते हैं। कॉस कर्व स्टार्ट होता है कहां से, मैक्सिमम से, मैक्सिमम एक्सिस मिनिमम axis maximum. This is the cost curve according to the question. This is the cost curve according to the question. Hopefully
There is no confusion in the curve sketching. After that, by considering the straight line y equals to kx, state the number of solution of the equation 3 cos 2x plus 2 equals to kx when k is -3. स्केचिंग की हेल्प लेंगे हम. कहा गया कि इक्वेशन क्या दी गई है हमें? इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू के एक्स. अब आप देखिए C1 मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं. y इक्वल्स टू के एक्स, C1 when k is -3, so y इक्वल्स टू -3x. अब आप देखिए इसमें दो वैल्यूज रखकर चेक कर लें आप. when x is 0, y is 0 मीन्स यहां से स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन बनाना. और अब दूसरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं. मैं रख रहा हूं x की जगह पर π/2. x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? π/2. तो क्या बनकर आ जाएगा बच्चों? ये इट विल बी -3 x की जगह पर जब पाई रखा जाएगा तो इट विल बी -3 डिवाइडेड बाय 2. हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं यहां पर. 4.7 जब π/2 है तो वैल्यू कितनी आ रही है y की? 4.7. 4.7 इज समवेयर हेयर. अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो बच्चों देखो एक स्ट्रेट लाइन जो है सिर्फ ए की जगह पर इंटरसेक्ट कर रही कर्व के साथ. तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हमें क्या देना है? स्टेट द नंबर ऑफ सोल्यूशन. कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन हुए इसके? ए की जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है तो 1 नंबर ऑफ सोल्यूशन. सेकंड में के की वैल्यू क्या दी गई है? सेकंड में आपको के की वैल्यू दी गई है 1. मींस y इक्वल्स टू के की जगह 1 रखा तो y इक्वल्स टू x. अब y इक्वल्स टू x की लाइन हम स्केच करेंगे. मैं इसको यहां से हटा रहा हूं. अगेन वही when x is 0 y is 0 और when x is 0 y is 0 और फिर मैं दोबारा से π/2 रखकर चेक कर रहा हूं. सो जब x की जगह पर π/2 रखा जाएगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? π/2 जब रखा जाएगा तो इट इज हियर. And what is the value of π/2? The value of π/2 is 1.57. It is somewhere, ये 2 है तो it is somewhere here. अगर इससे स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो हमें नजर आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन दो जगह से इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को y इक्वल टू x की. तो यहां पर जनाब कितने सोल्यूशन हो गए? 2 सोल्यूशन फॉर दिस. एंड नाउ द थर्ड वन. what is the third one? The third one is k equals to 3. The third one is k equals to 3. अब मैं इस लाइन को रिमूव कर रहा हूं और k equals to 3 की लाइन बनाऊंगा तो y equals to 3x हो गया. फिर वही when x is 0 y is 0, ये तो हो गया. अच्छा थोड़ा सा हमें इसमें पार्ट 1 में मिस्टेक हुई है हमसे. और पार्ट 1 में क्या मिस्टेक हुई है? हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो क्या कैलकुलेट की थी? -3 π/2. और -3 π/2 कितना आ रहा है? -4.71. तो -4.71 आ रहा है. अगर मैं आई एम डूइंग द पार्ट 1 अगेन. -4.71 π/2 पर -4.71. इट इज समवेयर हेयर. अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड द कर्व. तो जनाब फर्स्ट पार्ट का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0. कोई भी हमारे पास सोल्यूशन नहीं आएगा फर्स्ट पार्ट में. बट हियर y इक्वल्स टू 3x. अब ये वही पार्ट 1 वाली जो हम लोगों ने मिस्टेक की थी, अब ये लाइन बन जाएगी और यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन आ रहा है. क्योंकि पार्ट 1 में हमें नेगेटिव में जाना था, देयर इज नो इंटरसेक्शन. और पार्ट 3 में हमें पॉजिटिव में जाना है तो सिर्फ एक इंटरसेक्शन हमारे पास आया. सो इंटरसेक्शन हमने बता दिए यहां पर कि कितने इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं. वी डोंट हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. हमें कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट नहीं करना. हमें सिर्फ ये बताना है कि कितनी जगह पर इंटरसेक्शन हो रहा है. नाउ मजीद आगे चलिए. क्वेश्चन दिया गया द फंक्शन f g h आर डिफाइंड बाय 3 फंक्शंस आर हियर. आपसे कहा गया इन द डी पार्ट डिस्क्राइब फुली अ सीक्वेंस दैट मैप्स fx onto gx. जो fx को gx पर लेकर जाए ट्रांसफॉर्मेशन हमें बता देनी है. इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या किया है? x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. जब भी x मल्टीप्लाई होता है 2 से तो ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को बताया था
कि जब भी x मल्टीप्लाई होगा किसी एक कांस्टेंट से, तो इट मींस क्या हुआ है, ये स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। और फैक्टर क्या बनेगा स्ट्रेच का? जब x मल्टीप्लाई होता है तो फैक्टर रेसिप्रोकल बनता है, तो फैक्टर बना हाफ का। और जब x मल्टीप्लाई होता है तो स्ट्रेच होता है पैरेलल टू x एक्सेस। ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। तो जनाब क्या हुआ, पहले तो स्ट्रेच हुआ विद फैक्टर 1/2 पैरेलल टू x एक्सेस, साथ में +4 भी नजर आ रहा है, साथ में +4 भी नजर आ रहा है कि फंक्शन के x को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाओ और फिर 4 ऐड कर दो। तो जब 4 ऐड होता है तो ये क्या होती है बच्चों, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन को ऐसे लिख दिया करें, देखो x में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, कंप्लीट फंक्शन में ऐड हुआ है 4। तो ट्रांसलेशन क्या होगी, x में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, लेकिन कंप्लीट फंक्शन में हुआ, तो हमने y की जगह पर क्या रख दिया, 4 रख दिया। तो आप ट्रांसलेशन 0 4, x में भी अगर कुछ ऐड हो जाता तो वो यहां पर हम लिख देते, लेकिन यहां पर कुछ ऐड नहीं हुआ तो हमने x में 0 रखा और y की जगह पर हमने 4 रख दिया। तो दिस इज द ट्रांसलेशन। तो ये जनाब फंक्शन f जी एक्स में कन्वर्ट हुआ है बाय टू थिंग्स, स्ट्रेच एंड ट्रांसलेशन। नाउ इन द ई पार्ट डिस्क्राइब फुली अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स fx onto hx। अब हमें ये देखना है fx कन्वर्ट हो रहा है किसमें, hx में। क्या क्या हुआ है, अब आप देखिए पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ था x से, अब 2 मल्टीप्लाई हुआ है फंक्शन से। जब भी मल्टीप्लीकेशन होती है तो होगा तो स्ट्रेच ही, लेकिन अगर x से 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो फैक्टर हाफ रेसिप्रोकल। और अगर फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो फैक्टर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रेच हुआ फैक्टर 2 के साथ पैरेलल टू वाई एक्सिस। वन मोर थिंग, प्रीवियस पार्ट में एडिशन हुआ था 4 का इन फंक्शन, लेकिन यहां पर एडिशन हो रहा है π/2 का इन x। तो फिर क्या हुई, दोबारा से ट्रांसलेशन। इसमें अब फंक्शन में कोई चीज ऐड नहीं हुई है, इसमें फंक्शन में कोई चीज ऐड नहीं हुई, x में ऐड हुई है। जब फंक्शन में कोई चीज ऐड नहीं हुई तो 0, और x में ऐड क्या हुआ है, π/2। और याद रखिएगा अगर x में एडिशन हो π/2 का तो π/2 लिखा, साथ में माइनस लगा दिया। और अगर x में ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता, फंक्शन ऐसा लिखा हुआ होता, हियर इट इज 2f x माइनस हाफ पाई, तो हम क्या लिखते, फिर हम लिखते यहाँ पर π/2। लेकिन अगर एडिशन का साइन है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन। और अगर नेगेटिव का साइन होता तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ता, पॉजिटिव में। तो जनाब क्या हुआ, पहले स्ट्रेच हुआ फैक्टर 2 से पैरेलल टू वाई एक्सिस, और साथ में क्या हुई, ट्रांसलेशन in x minus π/2 and 0. So guys, this is all about your this paper. This was the last question. We have started our paper at 11:02, I think. Yes, I remember it is 11:02, and we have finished our paper at 12:06. 12:06. So it means total हमने 1 hour 4 minutes मीन्स 64 मिनट्स में पेपर सॉल्व किया। और पेपर कितने टाइम का होता है, 110 मिनट्स का। सो इट मीन्स इफ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर देन 110 मिनट्स आर एनफ टू सॉल्व all the questions. Right, students? So inshallah in the next class we are going to solve the paper of stats day after tomorrow. So see you inshallah in the next class. This is all about today's class. I'm going to upload this paper after finishing the class. So see you guys day after tomorrow. Thank you very much and Allah Hafiz.